Good morning, students. My name is Natwar Singh Rathod, and I am a social science faculty for class 9th. So, class 8th, from today, I will be taking your social science classes, and we are starting with a new chapter today, that is chapter number 6 of geography, which is human resources. So, let's begin. So, students, in this lecture, we will cover two topics. First is human resource and second distribution of population. So first, what is human resource? Now human resource है क्या? Okay. So एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, any resource or whatever the thing you consider resource is something useful for you. Okay. Only when, for example, the nature. Okay, in the nature, whatever thing you get, whatever thing you find it important, it is important because you find it useful. So just like that, if a people with their demands and ability can turn them into resources. For example, कोई इंसान ऐसा है who is having skill and who is having ability to do work, that person will be in a great demand. So that will be a resource for the nation, for himself, and for the others, and for the family. Now you can see in the blue letter, human resource. Okay. Now human resource is a resource when he is having skill, ability, and on the same time he is healthy, educated, and positively motivated. Okay. And this is how people develop resources as per their demand. Now, as per this required, why this line signifies requirement? For example, if you want to be a doctor, then your education and your healthiness and your motivation will be totally different. Your ability and skill will be totally different than one who is aspiring for any medical exam, any engineering exam, टीचिंग एग्ज़ाम और वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू बिकम. ओके, जो भी इनका प्रोफेशन होगा वैसे ही अलग अलग लोग अपने जो स्किल्स हैं, एजुकेशन है, उसको डेवलप करते हैं. जो इंसान बनना चाहता है वो उसके हिसाब से हायर स्टडीज़ वगैरह करता है और उसी के हिसाब से उसका रूटीन एंड मेडिकल जो बैकग्राउंड है वो होता है. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि सारे रिसोर्सेस एक जगह नहीं है. अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स हम देखें वो भी जस्ट लाइक दैट ह्यूमन रिसोर्स इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, कहीं पे आपको पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पे कम मिलेंगे, कहीं पे आपको हो सकता है कि कहीं पे आपको ज़्यादा ही मिले पढ़े लिखे, कहीं पे एकदम बिल्कुल ना मिले, जैसे कि ग्रामीण एरिया हो गया, रूरल एरिया. सो दिस लाइन इज पॉइंटिंग आउट दिस. सो इट वाई इट इज़ डिफरेंट. So the difference is in their education level, okay, age and sex. Okay, education level different हो सकता है. Why they are different? Because of their education. Everyone, all the professions are having different education. It could be age and then gender. So this was the first point. And now there is one section over here, that is, do you know? So, the government of India has a Ministry of Human Resource Development, which was earlier known as Ministry of Education, and from this year, that is 2020, 2020, अब भी इसका नाम वापस रीनेम या फिर उसको रिबैक कर दिया गया है. And now the HRD Ministry is known as Ministry of Education. Okay. So the ministry, the HRD ministry we are talking about, HRD ministry was created in 1985 by the Prime Minister, the then Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi. And what is the aim of this ministry? इसको अलग से rename करने की क्या ज़रूरत पड़ी? It was because the objective of this plan was to improve people's skills. Okay, उनको और ज़्यादा प्रतिभाशाली बनाना, उनके स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, सो दैट दे कुड बी इम्पॉर्टेंट पीपल एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री.
This is the section. Now there is one more section which is missing in this what the PDF I am having. The second one is just below it, that is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. So it was started in 2015, and the aim of this विकास योजना वॉज टू ट्रेन द यूथ 2016 से लेके 2020 तक जो भी नौजवान हैं उन्हें क्या करना, ट्रेन करना. अब किस चीज़ में ट्रेन करना, उस तरीके से ट्रेन करना, उतना उनको नॉलेजेबल बनाना कि वो जो भी रोज़गार अपने लिए देखते हैं या फिर किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्किल डेवलप कर सकें. ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हैविंग दैट रिसोर्स टू डेवलप देयर स्किल्स. उनके पास इतना पैसा नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है. सो फॉर दैट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज स्टार्टेड. ओके, सो दैट दे कैन बी ट्रेन्ड and their skills can be improved so that they can earn money. Now the point is distribution of population. Now the way in which people are spread. Okay, जो लोग फैले हुए हैं या फिर we can say in the simple term spread across the earth's surface, it is known as the pattern of population distribution. And we can say कि कहीं कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, कहीं कहीं पे कम हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, मीन्स दे आर नॉट इक्वली कि हर जगह हर कंट्री पे इक्वली पॉपुलेशन है. नहीं, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है. फॉर एग्जाम्पल, एशियन कंट्रीज वी आर हैविंग लार्ज पॉपुलेशन, देन यूरोप, देन अफ्रीका, देन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, देन इन नॉर्थ अमेरिका, एंड देन द ओशनिक कंट्री विच आर, oceanic means Australia, New Zealand and all, which are surrounded by ocean. For example, you can see here, you can see there is a table. Okay, and if I say, yeah, now you can see the figure 6.1. So in the figure 6.1 you can see the yellow portion live in Asia, they are major in numbers. Then this yellow portion, okay, they are major in numbers, and then European, the orange. Then African, the blue one is Central American, and then North American, and then Oceanic country. So in the normal term and by the observation we can say that Asian peoples are large and more in numbers than other population. For example, here you can see, so some areas are very crowded, okay, एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड. मतलब कुछ तो एरिया बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड है और कुछ में तो बहुत ही कम लोग, मतलब मुश्किल से कुछ पॉपुलेशन हमें दिखती हैं. सो द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड ईस्ट एशिया, एंड इंडिया इज़ अ साउथ एशियन कंट्री. ओके, साउथ एंड ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, एंड वेरी फ्यू पीपल लिव्स in the high altitude, मतलब high latitude areas, tropical desert areas, high mountains and areas of equatorial forest. For example, high latitude areas means जो कि बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, और यहाँ पे हम पोलर एरियाज़ की बात कर सकते हैं या फिर लैटिट्यूडल एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है. ट्रॉपिकल डेजर्ट है, हाई माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा माउंटेन है, तो प्लेन एरिया नहीं है जो ना ही एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है ना ही सेटलमेंट के लिए अच्छा है. देन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, दैट फॉरेस्ट एरिया इज़ वेरी डेंस्ड. ओके, सो ह्यूमन can't live there just because of large number of humidity, trees and other factors like animal and all. Now many more people live in north of the equator. So when we see a world map, so here you can see the equator line, उसके ऊपर जो northern hemisphere है उसमें ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा countries हैं. वहीं मैं बात करूँ नीचे equator के just southern part of the equator, the number of people living there and the countries are less. Okay, here you can see more people live in the northern part of the equator than the southern part of the equator. Now the world's most populous countries. Now populous countries, China, and then India, then USA, Indonesia and Brazil, and it goes on till Japan, the top 10. So students, in this lecture we have covered human resource and
then distribution of the population. So this is all from my side. Thank you.